अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबशर नूर कमियाना। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब के दो साहबजादे कासिम और सुलेमान साहब ने बरतानिया में एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारे वालिद साहब इमरान खान साहब को जेल में जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जान को ख़तरा है, तो हमारी मदद की जाए। हम अपने वालिद साहब की मदद करना चाहते हैं। और पहले हमको अपने वालिद साहब से फ़ोन करने की इजाज़त थी, हम अपने वालिद साहब से फ़ोन पे बात करते थे, जबकि अब यह सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अब हमें फ़ोन पे बात भी नहीं करने दी जा रही। तो एक इंटरव्यू में उनसे सवाल किया गया क्या आप पाकिस्तान में वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह हमारे वालिद साहब के लिए और ख़तरा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ के लोग खान साहब को ब्लैकमेल करेंगे, तो इसलिए हम वहाँ जाएंगे तो ये ख़तरनाक और ख़तरा बढ़ जाएगा। तो फिर उनसे सवाल किया गया कि आप पाकिस्तान की तरीक़ा साहब की जो क़यादत है उनके मतलब क्या कहना चाहते हैं, वो खान साहब की रिहाई के हवाले से मुखलिस हैं कि नहीं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो क़यादत जो भी है वो सब खामोशी से बैठे हुए हैं। ख़ासकर अली अमीन गंडापुर साहब वो खामोशी से बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेकर वो कोई उनकी रिहाई के लिए मुखलिस नहीं है, वो खातिर खा इक़दाम नहीं उठा रहे। तो हम अपने वालिद साहब की मदद करना चाहते हैं। तो इस इंटरव्यू के बाद अली अमीन गंडापुर साहब से एक सवाल किसी ने पाकिस्तानी साफ़ी ने सवाल किया कि कासिम और सुलेमान के जो इंटरव्यू शाया हुआ है आपने वो देखा है? तो वो उन्होंने क्या दिया, मैंने नहीं देखा, क्या पता वो फेक है या असली, मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह की पाकिस्तान की जो क़यादत बैठी, इस तरह के लोग हैं, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये सब खान साहब की रिहाई के लिए मुखलिस नहीं है, इनको खान साहब की रिहाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब चाहते हैं कि बस खान साहब जेल में बैठे रहें, तो इनके तो मज़े हैं, ये अपनी कुर्सियों के मज़े ले रहे हैं, अपनी वजारतों के मज़े ले रहे हैं। बाकी आपको मैं ये क्लिप शेयर कर रहा हूँ, आप कासिम और सुलेमान साहब के ये दो क्लिप देखें। ये वो किस तरह बता रहे हैं कि हमारे वालिद साहब को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और उनकी जो क़यादत है वो कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठा रहे। And guys, what would be your message? What would be your message, Qasim Suleman, to the people of Pakistan and to the rest of the world? Don't lose faith that he I can tell you has not lost faith. He hasn't given up. He's not just sitting in his cell kind of twiddling his thumbs. He's very much planning for the future, believes that change is coming. So yeah, don't sort of lose faith and keep protesting the injustice. And yeah, to the international community, I think it's important to say, take action. If you can make a difference, there's someone who's in a solitary confinement cell who is being denied basic human rights. He should be the leader of Pakistan, and instead he's being kept in inhumane conditions, being tortured at periods. So if you care about human rights, this is something, this is paramount. This is number one on your nail on the head. It's a technique to try and break him. He's a very, very resilient person, and he's one of the hardest people possible to break. But all of these techniques, shutting off the lights, leaving him in the pitch black, not allowing doctors to go and see him, making sure that all of our calls are at completely random times and that we might miss them, or whatever, not letting us have our court-mandated weekly phone calls. All of this is tactics to try and break him. But he's, good luck, because he's as resilient as they come mentally, and that comes down to his faith. He has strong faith in God, and also he's always had that kind of mental toughness as well. So it's all torture techniques, exactly as you say. Another thing, wasn't he offered the option or a deal that included house arrest, and he rejected that deal? And I think he had demands. I think he wanted some other people related to his family or as members of his political party. Maybe Suleiman, can you give me a bit more context on that deal? And kind of him rejecting that deal is another indicator of his resilience. So I think that's mainly to do with the fact that there are many of his supporters and his party members and family members who are in prison currently in similar conditions to him. So, and he's very, very principled, and he wouldn't, on their behalf, I think that definitely would have played a part. He wouldn't want to kind of, he'd want to be aligned with them. He's always been kind of very principled, and I don't think he'd go against his principles very on a whim.